search laptop and I'll upload the notes by today itself. Anyways, the new topic that we're going to discuss is called as linear programming. Problem. Linear programming problem. That's the name of the topic that we're going to discuss today. And we will just understand what exactly is a linear programming problem before we actually start solving the problem. And now imagine I am a carpenter. Let us say I'm a carpenter. Here is a carpenter. Okay. Now this carpenter has some wood. He has some glue, that is Fevicol. And he has got some labor time. These are the resources. This will be called as the resources. These three are the, what are resources? What are resources? In terms of economics, anything that can create utility value can be called as a resources. Anything that can create form utility, time utility, place utility can be called as resources. In common terms, anything that can help me to create something new can be called as a resources. So I got a printer, I got some paper, I can take out some printouts, I can bind a book. That is also, they are also resources. I am a chef, I can cook very good food. And so I have multiple resources like rice, dal, maybe some vegetables, oil and various spices. I can make some food with it. Same way as a carpenter, I may have wood, I may have Fevicol, I may have labor time. Now in economics, you must have learned somewhere down the line, human wants are unlimited, but the means to satisfy them are limited. Resources, money is a resource, water is a resource, but उसका एक लिमिट है अपना, उसको कितना आप कंज्यूम करोगे. As a farmer, आप कितना पानी यूज करोगे. As a factory owner, how much water will you consume? There is a limit for that. In the same manner, all the resources are limited. Now imagine, I have wood of 1000 square feet. I have 100 kg of Fevicol and 400 hours of labor. And using this wood, Fevicol and labor time, I can make two products. One is chairs and the other one is tables. Okay, sir. Chairs require 50 square feet of wood. Table requires 80 square feet of wood. ध्यान दो. एक मिनट रुको. Any new admissions?
Any new entries here? No one? Word screen is visible to you? तो क्या होगा वहां पे अगर मैं डिस्कनेक्ट हो गया ना तो पूरा उड़ जाएगा वो स्क्रीन. That's the reason I have switched to word screen. That was a wide screen of Zoom. तो कोई में बाई चांस डिस्कनेक्ट होगा तो जितना भी लिखा है पूरा उड़ेगा और उसको वापस से लिखना पड़ेगा. So here is my linear programming problem. We are trying to learn what is a linear programming problem. हम तो पहली बार सीख रहे हैं सर, हमको तो पता ही नहीं कुछ क्या होता है. कोशिश कर रहे हैं सीखने की. सर हम बात कर रहे थे there are some human resources. There are some human resources. There are some resources which are required by us. हम एग्जांपल ले रहे थे कारपेंटर का. मैं दो एग्जांपल लूंगा. मैं पहला एग्जांपल लूंगा फार्मर कारपेंटर का, दूसरा एग्जांपल लूंगा मैं फार्मर का. हमारा जो कारपेंटर है सर, he can make either chairs or he can make tables. Now chairs require wood. How much wood is required for chair? So 50 square feet. 50 square feet of wood is required for chairs. 80 square feet of wood is required for table. Then we require Fevicol. So Fevicol we require here is, let us say, 500 grams, and here we require, let us say, 1000 grams. That is half kg and 1 kg. I can write in kg also, 0.5 kg and 1 kg. ऐसा कुछ नहीं. Okay, and then the labor time. How much time is required to make a chair? The chair will take 2 hours, whereas table will take only 1.5 hours. ठीक है. अब हमारे एग्जांपल में हमारे पास जो वुड था उसका सप्लाई कितना था? हाउ मच वाज द सप्लाई ऑफ वुड? 1000 स्क्वायर फीट. सप्लाई ऑफ फेविकॉल 100 kg. सप्लाई ऑफ लेबर आवर्स, लेट अस से 120 hours. I'll convert this into kgs. This is half kg, 0.5 kg, and this will be 1 kg. So what is the problem? Linear programming problem. Linear programming क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे. प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि कारपेंटर के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है. उसके पास इतना ही वुड है, इतना ही फेविकॉल है और इतना ही टाइम है टू मैन्युफैक्चर आइदर टेबल्स और चेयर्स. He has to decide whether he should manufacture table. क्या मैं टेबल बनाऊं या चेयर बनाऊं या दोनों बनाऊं? अच्छा, दोनों बनाना है तो सर हाउ मेनी चेयर्स एंड हाउ मेनी टेबल्स? How many chairs and how many tables? Again, that is a big question mark. So point is, I have to decide as a manufacturer, as a carpenter, how to use these resources of mine. How to use these resources of mine. These are the resources. वुड, फेविकॉल एंड लेबर, जिनको कंज्यूम करके मेरा दो एंड प्रोडक्ट्स बन रहा है. मेरा दो प्रोडक्ट्स बन रहा है. एक है वुड और एक है टेबल. सॉरी, एक है चेयर और एक है टेबल. द प्रॉब्लम इज डिसाइडिंग कितना बनाओ. So if I have unlimited amount of money, I don't need to decide कहाँ पे कितना खर्चा करूं. बहुत पैसा है, खर्चा करो जितना मांगता है. कार लेना है कार ले लो, बाइक लेना है बाइक ले लो, नया मोबाइल लेना है मोबाइल ले लो. प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है सर? जब मेरे पास है ना लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होगा.
So if I am having only, let us say, 5 lakh of rupees, and 5 lakh of rupees में मुझे घूमना भी है, मुझे लैपटॉप भी लेना है, मुझे मोबाइल भी लेना है, मुझे कार भी लेना है लोन पे, then it becomes a problem. Or money is a resource that can buy good number of things. Same way यहाँ पर भी वही चीज हो रही है सर. मेरे पास एज ए मैन्युफैक्चरर आई हैव गॉट वुड, फेविकॉल एंड लेबर. दिस आर माय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड एज रिसोर्सेज हियर. और इनको यूज करके मुझे मेरे फाइनल प्रोडक्ट्स चेयर्स एंड टेबल्स बनाने हैं. सो लीनियर प्रोग्रामिंग, if someone asks me to define linear programming, what is linear programming? Define linear programming. मैं short में बोलूंगा अभी LPP. I'll always keep on saying LPP, LPP, LPP. LPP stands for linear programming problem. So what is a linear programming problem? Google करने का जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ. No need to Google it out. Okay, what is a linear programming problem? Okay, I will say linear programming problem is a technique of deciding how to use limited resources with alternate uses in such a manner that the specific objectives are fulfilled, yeah, achieved. That's the question. So LPP is nothing but it is a technique of deciding how to use the limited resources which are the problem. क्या है, इन resources का multiple use है. अगर वुड में सिर्फ चेयर्स बनाने के लिए यूज कर सकता था, अगर मैं आपको पैसे नहीं देके आपको मैं वाउचर देता हूँ, मैं बोलता कि ये वाउचर है, इस वाउचर से आप सिर्फ खाना खा सकते हो या सैलून में जा सकते हो या स्पा ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं है ना. आपको मैंने 10,000 का वाउचर दे दिया, ये वाउचर कहाँ पे खर्चा करना आपको अच्छे से पता है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं है. तो वहां पे मुझे पता है कि ये मैं सिर्फ फूड पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ. आई कैन यूज दिस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग द फूड. आई कैन यूज दिस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग टू ए सैलून. तो वहां पे तकलीफ नहीं है. तकलीफ कहाँ पर है, जब मेरे रिसोर्सेज का मल्टीपल यूज होता है. आपको अगर पता होगा कि भाई ये पानी सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए यूज कर रहा था, आप उसी के लिए यूज करोगे, और कहीं पे आप उसको यूज ही नहीं कर सकते. अगर आपको पता है कि ये पानी सिर्फ पीने के लिए यूज करना है, तो आप वो पीने के लिए यूज करोगे. पर लेकिन जब आपको पता है कि भाई हाँ ये पानी है, ये पैसा अलग अलग जगह पे यूज कर सकता है, तो बॉस देयर इज अ बिग इशू. देन that are having multiple uses. And because the resources are having multiple uses, I need to decide, I need to make up my mind where should I use it. And in this whole process, there will be some objectives. If you remember very carefully in OR, whatever we have done in OR, we had some specific objectives in our mind. Objectives can be either to याद करो objectives क्या था. देखो जिंदगी भर वही चलने वाला है OR में. तुम कोई भी चैप्टर में जाओ, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा, नहीं तो सर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा. My objectives can be to minimize the loss. Profit तो minimize नहीं करूँगा सर मैं. My objectives can be to minimize the number of defectives. My objectives can be to minimize the wastage. My objective can be to minimize the absenteeism. My objectives can be to maximize the profit, maximize the attendance, maximize the contribution. मार्जिनल कॉस्टिंग वाला कंट्रीब्यूशन, पिकनिक वाला कंट्रीब्यूशन नहीं. पिकनिक वाला कंट्रीब्यूशन तुम्हारा खर्चा है. मार्जिनल कॉस्टिंग वाला कंट्रीब्यूशन तुम्हारा रेवेन्यू है. मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी.
एंड सो ऑन। नॉर्मली अपने केस में दो ही चीजें होगा, एक तो कॉस्ट मिनिमाइज करना है, नहीं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, और स्पेशली इन द टॉपिक ऑफ एलपीवी हम हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, नहीं तो कॉस्ट को मिनिमाइज। और ये कॉमन सेंस है यार, मैं जब खर्चा कर रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कम से कम खर्चा होना चाहिए, और जब मैं कोई चीज बेच रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होने। कॉमर्स के बच्चे हो, इतना तो समझ में आ जाता है आपको, कोई बड़ी चीज नहीं है सर। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, चलो अब सर इसको सॉल्व कैसे करना है। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूलेशन। व्हाट इज फॉर्मूलेशन? Formulation is a technique of converting a LPP, that is a linear programming problem, into a mathematical format. Into a mathematical format. मतलब सर इसका मतलब है, हमें जो अभी इतना बड़ा हमने स्टोरी बनाया था कि हमारे पास एक कारपेंटर है, उसके पास 3 अलग अलग रिसोर्सेज है जो मैंने पिंक में हाईलाइट किया है, उनको यूज करके वो 2 एंड प्रोडक्ट बना सकता है, चेयर और टेबल्स। इन चीजों को सर मैं अगर चाहूं तो मैं इसे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख सकता हूं। कैसे, वही हमको आज सीखना है। बिल्कुल एक्सट्रीमली स्लो इन द फर्स्ट, मेरा आदत है फर्स्ट में एकदम आराम से जाने का। एक बार वो समझ में आ गया ना, बाद में बहुत इजी लगेगा। Now comes the question, sir, what is my objective in this problem? In this problem, my objective can be to earn the profit by making the chairs and tables. That is, the chairs से मुझे profit होता है, that is, the chairs से मुझे profit होता है 150 rupees per chair, and table से मुझे profit होता है सर 200 rupees per chair, 300 लेता हूँ मैं। That's it. So this is my question. अब इसको सर मुझे फॉर्मुलेशन करना है। अच्छा, फॉर्मुलेशन करना है मतलब क्या करना है? What I need to do? So I need to convert this. I need to convert this into a mathematical pattern, and then I need to solve it as well. Solve कैसे करना है? Solve करना है मतलब क्या करना है सर? Solve करना है मतलब keeping in mind these limited resources, I need to decide how many chairs and how many tables. That is called as to solve the linear programming problem. That is called as to solve the linear programming problem. क्या करना है यहाँ पे, कैसे इसे सॉल्व करना है? How do I need to solve this? What I am supposed to do in this case? Sir, we will first try to understand what will be the format of a formulation based problem. I am putting this in a table. आपको ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि टेबल में ही डालना है। The first thing we have is a objective function. First thing we have is the objective function. Next we have, after objective function, is constraints. At last we have something called as non-negativity constraints. Anyone who has done maths at 12th knows very well what I'm talking about. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं क्या करना चाहता हूं? सर मैं ये डिसाइड करना चाहता हूं हाउ मेनी टेबल्स एंड हाउ मेनी चेयर्स।
तो सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, उसके पहले भी और एक चीज आएगा सर, विच इज बेसिकली assumption. First of all, we'll make an assumption. Let, all capital लिख रहा हूँ, आप मत लिखना all capital. Let the carpenter manufacture X1 chairs and X2 tables. ये हमने assumption ले लिया कि हमारा जो कारपेंटर है वो कितना चेयर बना रहा है सर, X1 chairs. He is making X1 chairs. ठीक है सर, and we are assuming he is making X2 tables. Fine. बोलो भाई, अब मुझे डिसाइड करना है कितना चेयर्स एंड कितना टेबल्स। तो हमने फिलहाल एजम्पशन लिया कि हमने बनाया है X1 चेयर्स और X2 टेबल्स। अब ये जो सप्लाई है ना सर, ये लिमिटेड है, जिनकी वजह से मुझे थोड़ा मुझ पे रोक लग जाती है कि कितना बनाना है। अगर मेरे पास अनलिमिटेड वुड, अनलिमिटेड फेविकॉल, अनलिमिटेड लेबर टाइम होता तो मुझे डिसाइड करने का जरूरत नहीं पड़ता, जितना बिकता था उतना मार्केट में मैं उतना बनाता था। I will make whatever is demanded in the market, I will supply that much quantity. But because I have only limited resources, मेरे पास जो रिसोर्सेज है, मेरे पास जो साधन है जिनका इस्तेमाल करके मैं ये चेयर और टेबल बनाऊंगा सर, वो बहुत लिमिटेड है। उसका क्वांटिटी मेरे पास सिर्फ वुड का 1000 स्क्वायर फुट है, उससे ज्यादा मेरे पास लकड़ी नहीं है। 100 kg से ज्यादा मेरे पास फेविकॉल नहीं है। 120 आवर्स से ज्यादा मेरे पास लेबर टाइम नहीं है। तो मुझे उतने समय में, उतने लकड़ी में, उतने फेविकॉल में ही मुझे क्या करना है, मुझे मेरा दोनों प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। I want to earn the maximum profit. Any rational person will always go for maximizing the profit. No one will like to minimize the profit. No one will like to minimize the profit. हर कोई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ही करना चाहेगा। रैशनल पर्सन यही सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। So my objective function will be denoted by something called as a Z. Okay, Z equals to, sir how many chairs I am making? सर मैं बना रहा हूं, सर मैं बना रहा हूं कितना चेयर्स? सर आई एम मेकिंग X1 चेयर्स। ये अच्छा सर, एक चेयर के मुझे कितना प्रॉफिट है? 150 रुपीज प्रॉफिट पर चेयर। 150 रुपीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चेयर्स करो, 150 प्रॉफिट पर चेयर। ये आपका प्रॉफिट एक चेयर का है 150 रुपया, मल्टीप्लाइड बाय कितना चेयर है? X1 चेयर्स, इनको मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिलेगा टोटल प्रॉफिट फ्रॉम बाय मेकिंग द चेयर्स 150 इंटू X1, 150 इंटू X1 प्लस, सर ये हो गया चेयर वाला प्रॉफिट। टेबल वाला प्रॉफिट कितना आएगा सर? एक टेबल का प्रॉफिट है सर 300 रुपीज, एक टेबल का प्रॉफिट है 300 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय हम कितना टेबल बना रहे हैं तो वो तो अभी हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन हमने एज्यूम लिया है, एज्यूम किया है। कितना एज्यूम किया सर? X2 टेबल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300 एक टेबल का प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय X2। ठीक है सर। तो माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिसाइडेड कि मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है। दिस मच इज द प्रॉफिट आई हैव टू अर्न। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन लेकिन रोहित शेट्टी वाला लेकिन ही खतरों के खिलाड़ी, लेकिन मुझे ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये बात भी ध्यान में रखनी है कि मेरे पास जो रिसोर्सेस है सर वो बिल्कुल लिमिटेड है। I have only limited resources. I have only limited resources. उनको ध्यान में रखते हुए मुझे बताओ, मैं अगर x1 चेयर बनाऊंगा मेरे बच्चा लोग, इफ आई मेक x1 चेयर्स, तो x1 चेयर्स बनाने के लिए कुछ लकड़ी तो लगेगा। हाउ मच इज द वुड रिक्वायर फॉर वन चेयर? 50 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय कितना चेयर्स? x1। सेम वे हाउ मच वुड इज रिक्वायर्ड फॉर ए टेबल? 80 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय कितना टेबल्स? x2। तो ये मेरा टोटल क्वांटिटी कंजम्पशन हो गया। 50x1 is my total wood consumed for chairs. 80x2 total wood consumed for tables. ये दोनों मिला के जो मेरे पास टोटल होगा ना बेटा, ये 1000 के ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास उतना ही है। जितना मेरे जेब में पैसा होगा उससे ज्यादा पैसा मैं खर्चा नहीं कर सकता हूँ। जितना मेरे पास वुड होगा उससे ज्यादा वुड में कहीं पर भी यूज, उससे ज्यादा वुड में यूज नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर वही होगा। यहाँ पर मैं मेरा पहला कंस्टेंट आएगा, मैं लिखूंगा 50 इंटू x1 प्लस 80 इंटू x2। 50 इंटू x1 plus 80 into x2, it will be, how much it will be sir? It can be more than 1000। अच्छा ऐसा है कि जितना मेरे पास पूरे सबका सब खत्म करो, जितना मेरे जेब में पैसा उतना पूरा का पूरा एक ही दिन में खत्म करो? नहीं सर, ऐसा कोई रूल नहीं है। जितना मांगता है उतना यूज कर सकते हैं। यहाँ पे साइन आएगा लेस देन इक्वल टू 1000 kg, 1000 स्क्वायर फीट। तो मेरा पहला कंस्टेंट आ गया सर 50 इंटू x1 प्लस 80 इंटू x2 लेस देन इक्वल टू 1000। ये मेरा वुड वाला कंस्टेंट हो गया। मैं लिख के रखता हूँ ब्रैकेट में, हालांकि आपको लिखने का जरूरत नहीं है ऐसा कुछ। इसके बाद दूसरा भी कंस्टेंट है अपने पास फेविकॉल का, तो वहां पे आएगा 0.5 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 लेस देन इक्वल टू 100 kg। सर वो 1000 वाला फिर से बताओ ना। मॉडल लेक्चर सुन रहे तो और पूछा, मतलब बच्चा लेके सुन रहा है ऐसा इसका मतलब। भैया तेरे पास जो तो कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करने वाला है वो डिसाइड हो गया है। x1 chairs, दिस इज द x1 नंबर ऑफ चेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 50 करेगा तो सर दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वुड आई एम गोइंग टू यूज फॉर मेकिंग द चेयर्स। टेबल का भी ऐसी है सर, 80 स्क्वायर फुट एक टेबल का मल्टीप्लाइड बाय कितना टेबल? 10 टेबल तो 80 इंटू 10 होगा। 20 टेबल तो 80 इंटू 20 होगा। 5 टेबल तो 80 इंटू 5 होगा। नहीं सर 5, 10 और 20 नहीं है सर, मैं तो x2 टेबल्स बना रहा हूँ तो 80 इंटू x2 कर दो। ये हो गया बेटा मेरा इन दोनों को ऐड करके जो मैंने निकाला, दिस इज माय टोटल वुड कंज्यूम्ड। दैट इज आई हैव यूज्ड दिस मच क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर मेकिंग chairs and tables, and this total wood cannot be more than what I have। मेरे पास तो 1000 ही है बॉस, वो उससे कम हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, उसके लिए साइन आया लेस देन इक्वल टू। क्लियर? सेम वे फेविकॉल का भी ऐसी है। एक चेयर के लिए फेविकॉल लगता है आधा किलो। मैं कितना चेयर बना रहा हूँ सर? x1 चेयर तो 0.5 इंटू x1, यहाँ पर 1 इंटू x2, तो ये दोनों को ऐड करेगा तो ये मिलेगा मुझे मेरा टोटल फेविकॉल कंज्यूम्ड। ये 100 kg के ऊपर नहीं जा सकता है सर, उससे कम हो सकता है सर, बच सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। इक्वल टू हो सकता है, नहीं तो कम हो सकता है। इक्वल टू हुआ मतलब एग्जैक्टली जितना था हमने पूरा यूज कर लिया। ठीक है सर। अब और एक चीज है, लेबर का भी एक कंस्टेंट है सर।
लेबर में इनका कहना है कि भाई लेबर में जो है ना 2 आवर्स लेबर लगता है चेयर के लिए, तो 2 इंटू x1। तीसरा कंस्टेंट क्या आएगा मेरा? मेरा तीसरा कंस्टेंट आएगा सर, मेरा तीसरा कंस्टेंट आएगा 2 इंटू x1 प्लस 1.5 इंटू x2 लेस देन इक्वल टू कितना है अपने पास? टोटल आवर्स कितना है? 120। ये मेरे 3 कंस्टेंट्स हो गए, ये मेरे 3 कंस्टेंट्स हो गए। ओके, लास्ट पार्ट बात करता हूं सर। अभी लास्ट पार्ट में बात करूंगा, that is non-negative. See, when I'm going to solve this problem, I have converted my practical problem into something that is mathematical, that is called as the formulation. What we are learning right now is formulation. हम सीख रहे हैं formulation of a linear programming problem. ठीक है सर। अब बच्चा लोग, मुझे जब इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे x1 और x2 का वैल्यूज मिलेगा। x1 मिल सकता है 5, x2 मिलेगा 10, x1 मिलेगा 0, x2 मिलेगा 20, x1 मिला 15, x2 मिला 10, ऐसे वैल्यूज मिलेंगे। अगर मुझे मिला x1 माइनस 5, x1 माइनस 5 मिला, मतलब नंबर ऑफ चेयर्स कितना बनाने का है? -5 चेयर्स। कैन यू मेक -5 चेयर्स? सर आई कैन मेक 0 चेयर्स, आई कैन मेक 0 टेबल्स। कैन आई मेक -5 चेयर्स और कैन आई मेक -2 टेबल्स? नहीं सर। सर ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। मेरा वेट 0 हो सकता है, मेरा वेट माइनस में नहीं जा सकता है। ओके, मेरा हाइट 0 हो सकता है, मेरा हाइट माइनस में नहीं जा सकता है। ओके, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि सर ये जो हमारा एजम्पशंस है ना x1 x2, दिस रिप्रेजेंट्स ए फिजिकल क्वांटिटी, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ बेल्स, नंबर ऑफ डॉल्स, नंबर ऑफ केजी ऑफ ए फूड, क्वांटिटी है सर, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। वो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 हुआ मतलब नहीं बनाने का है, या पॉजिटिव होगा मतलब मोर देन 0 होगा सर। इसलिए हम क्या लिखते हैं लास्ट में, भाई ये जो x1 है ना सर, x1 कैन नॉट बी नेगेटिव, it can be equal to 0, it can be more than 0, it can be equal to 0 or it can be more than 0। तो मैं लिखूंगा x1 more than equal to 0। तो x1 के लिए लिखा है तो x2 ने क्या पाप किया, उसके लिए भी लिख दो। x2 का भी वही लिखेंगे सर हम लोग। इन केस ऑफ x2 अगेन आई विल राइट x2 more than equal to 0। मतलब so I have framed a linear programming problem। Basic thing, assumption, and then the objective function, constraints and non-negativity constraint। ये मैंने फुल फ्लेज प्रॉपर फॉर्मेट में किया है। यही चीज आप बिना ऐसा कोई डेकोरेशन या मेकअप करते हुए डायरेक्ट भी कर सकते हो, जहां पर आपका कोई लाइंस नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि आपने ये वाला जो पार्ट है, ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। आपका आंसर सिर्फ ये पहला एजम्पशन इतना, दिस मच, और ये चीज इतना भी किया तो सफिशिएंट है, इसका भी जरूरत नहीं कुछ।
assumption लिखने का जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने पहला समझा बोल के इतना भी किया तो सफिशिएंट है। आगे मैं बोलूंगा इसको हाफ मार्क, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 1 मार्क, कंस्टेंट्स को 1 1 मार्क, सबसे लास्ट में जो है नॉन नेगेटिव कंस्टेंट उसको भी हाफ मार्क। दिस इज द फ्लो ऑफ व्हाट यू से द marks that you can assume. Is it clear to all? Any questions? Any questions? So ये समझ में आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर? I am talking about something called as linear programming. चलो शूट ना फास्ट, जो भी लिखना है यहाँ से इतना लिख लो, ऊपर का पार्ट बाद में दिखाता हूँ। Do you want me to show the upper part first? If you want, you can just see it as well. जो भी लिखना है लिख लो, रफ में लिखो, फेयर में लिखो, आपके ऊपर कैसे लिखना। नहीं लिखना है मत लिखो, मुझे कुछ मतलब नहीं है उससे। Honestly, at online level, I am not up to the student. ये लिख करके बेटा पढ़, ध्यान दे। ये पीपल आर माई कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, इतने तो समझदार है कि पढ़ना कि नहीं पढ़ना।
डन। हो गया बच्चा लोग? यस सर, हो गया। We need to solve some problems now based on this. Sum number 5. A manufacturer produces bulbs and tubes. तो हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, bulbs and tubes. प्रोडक्ट्स को हम लोग हमेशा पॉसिबली ऊपर लिखते हैं, ये हमारा bulbs और ये हमारा tubes. And each of these must process through two machines M1 and M2. ये आपका मशीन M1, ये आपका मशीन M2. ठीक है सर, ये हमारे दो मशीन्स हो गए. A package of bulb requires 1 hour of work on machine M1. मशीन 1 में बल्ब को लगता है 1 आवर, ठीक है. एंड 3 hours of work on machine M2. और मशीन M2 में लगता है सर 3 hours. ये भी सही है. A package of tube require 2 hours on machine M1. ट्यूब को लगता है यहाँ पे 2 hours, मशीन M2 पे लगता है उसको 4 hours. He earns a profit of 13.5 per package of bulb. प्रॉफिट कितना होता है सर? बल्ब में प्रॉफिट होता है 13.5 और ट्यूब में प्रॉफिट होता है सर 55 रुपीज. ठीक है सर, क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है. क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, वो है कि मेरे पास कितना आवर्स अवेलेबल है. मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं क्वेश्चन में. एज्यूम 20 hours of machine M1 and 30 hours मशीन M2. ये लाइन मैंने क्वेश्चन में ऐड किया है, ये बुक का क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में और उन्होंने टाइम अवेलेबल दिया नहीं अपने को. दैट विल बी आवर सप्लाई. मेरे पास टोटल टाइम कितना अवेलेबल है? तो मेरे पास मशीन 1 का टोटल 20 आवर्स अवेलेबल है, जो मैंने क्वेश्चन में अभी ऐड किया, और मेरे पास मशीन 2 का 30 आवर्स अवेलेबल है, जो मैंने अभी ऐड किया. ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं? परफेक्ट. ये हो गया हमारा प्रॉब्लम रेडी. इसको बोलते हैं टैबुलेशन. हमने प्रॉब्लम को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया. अब हमारा शुरू होगा मेन फॉर्मुलेशन. ओके, हम लिखेंगे सबसे पहले लेट X bulbs and Y tubes are manufactured or produced. And the difference between the word produce and manufacture, they are one and the same. My question is produced and manufactured are one and the same, or they are different? Aniket, what do you say? यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट दिया है,
maximum. हाँ बोलना निखिल. Is produced and manufactured one and the same? इधर क्या बोलता है? Girls, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका. girls is produced and manufactured one and the same. Yes, sir. Yes, sir. It's the same. Who says that they are same? Shriya. Who said yes? Heather says yes. I did. Preeti says yes. Okay, fine. They are used interchangeably for each other, but they are not same, honestly. When I say produce, it should be produced by using the natural resources by a natural process. Manufactured is something that is man-made. Shoes can be manufactured, biscuits can be manufactured, milk cannot be manufactured, milk can be produced. Food grains can be produced, they cannot be manufactured. That is the basic difference. चलो इंग्लिश की बात कहाँ कर रहे हैं हम, मैथ्स पे ध्यान दो सर. चलो नहीं समझे तो टेंशन मत लो. We do use them interchangeably. Coming to the point now, maximize the profit. How much is the profit per unit? बल्ब का प्रॉफिट कितना है सर? 13.5 है. हमने कितना बल्ब एज्यूम किया है सर? हमने एज्यूम किया है x बल्ब्स. और हमें ट्यूब्स भी है एज्यूम सर, हमने एज्यूम किया है y ट्यूब्स. तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन आएगा z इक्वल्स टू 13.5 into x प्लस 55 into y. ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा. सब्जेक्ट टू मेरा कंस्टेंट्स क्या है सर? मेरा पहला कंस्टेंट है मशीन आवर्स का 1x प्लस 2 into y. 1 into x plus 2 into y. सर मेरे पास टोटल टाइम 20 आवर्स है. मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं बोला ये सब में. मिनिमम बोलेगा तो मोर देन साइन आता है. अभी मेरा साइन सर लेस देन इक्वल टू 20 आवर्स आएगा. से में दूसरा कंस्टेंट मेरा आएगा 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 30. ये हो गया मेरा दो कंस्टेंट्स. ये हो गया मेरा दो कंस्टेंट्स. और लास्ट में आएगा सर मेरा नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स x मोर देन इक्वल्स टू 0, x more than equals to 0, comma y more than equals to 0. That's it. खत्म. सम खत्म. ये तो किया हमने सर. This is a formulation based problem. Any questions, any queries, any doubts? सब कुछ क्लियर है. Any doubts? डन बच्चा लोग. डाउट है कुछ? Don't write the question, only the solution.
All of you done? All of you done?